Hello everyone, my name is Dipali and I welcome you to the channel It's Awesome Science. So today we are going to discuss about the Protista subparts, which is Euglenoids, right? In the previous video, I have talked about the Protista subparts, which is your dinoflagellates and your chrysophytes, fine. So we are now going to talk about Euglena. So the very important thing is that these are present in aquatic habitats and damp soils. ठीक है, they are unicellular, उनके पास flagella रहेंगे. ठीक है, इनकी body cover रहती है thin और flexible pellicle. Pellicle means एक पतली सी coat. ठीक है, इट लैक सेल्यूलोजिक सेल वॉल, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था. ठीक है, इनके पास डायटम्स के पास सेल वॉल होती नहीं है, बट अगर जब भी होती है तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, बट इसके पास नहीं होती है. यूग्लिनॉइड्स के पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. दे परफॉर्म क्रीपिंग मूवमेंट. क्रीपिंग का मतलब रेंग रेंग के चलता है. स्नेल को देखा है कैसे चलता है. ठीक है, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीजें करते हैं. न्यूट्रिशन होलोफाइटिक, सॉलिड फूड खा सकते हैं. सेप्रोबिक, डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, और इसी वजह से इनका जो न्यूट्रिशन है मिक्सोट्रॉफिक है, मतलब किसी भी चीज को वो खा सकते हैं, राइट. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, राइट, और वो अपने खाने को, रिजर्व फूड को पैरामाइलम और पैरामाइलम बॉडीज के अंदर स्टोर करके रखते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. सो यू कैन, व्हेन यू विल मेक नोट्स और व्हेन यू विल क्लिक द स्क्रीनशॉट, देन मेक श्योर दैट यू जस्ट अंडरलाइन दीज थिंग्स एज इम्पोर्टेंट, राइट. यूग्लिनॉइड्स रिप्रोड्यूस बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. इस तरीके से वो बाइनरी फिशन करते हैं, मींस लेंथ में ऐसे ट्रांसवर्स नहीं करेंगे, इस तरीके से बच जाएंगे. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ यहीं पे स्क्रीन पे. लेट्स से ये आपको यूग्लिनॉइड दिख रहा है, तो ये इस तरीके से अपने आप को बीच में से काट देगा, राइट. सो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, राइट. बाइनरी फिशन मींस व्हेन द बॉडी डिवाइड्स इनटू two parts, and the examples are Euglena, Phacus, etc. Right, so these are some features about Euglenoids, which is a subpart of kingdom Protista. Now we are going to learn about consumer decomposer protist. This name you might not have heard in your NCERT, but it is for your slime molds. As you can see in the picture, this slime mold, right? So they possess both characteristics of animals and fungus, and slime molds are saprophytic. It means they feed on dead remains of the animals and plants. Okay, they are also named as fungus animals because they share the characteristics of animals and are known as protistian fungi due to their protestant nature. अब जो slime molds होते हैं वो असेलुलर होते हैं और सेलुलर भी होते हैं. इनकी 600 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 27 स्पीशीज जो है वो इंडिया के अंदर नोन है, राइट. सो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल प्लेसेस. टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में पाए जाते हैं, राइट. द बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड इज कोटेड विद म्यूसिलेज, राइट, जो कि उसको जेलेटिनस कंसिस्टेंसी देता है, चिपचिपा या जो स्टिकीनेस होता है, और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे आर ऑलरेडी सेप्रोफाइटिक, right. They are surrounded by the plasma membrane, foggy plasma membrane. The spores have the cellulosic cell walls. जो उनके spores होंगे उनके पास cellulose की cell wall होगी. They show both phagotrophic और saprotrophic nutrition. और phagotrophic means engulf कर लेना, right, और saprotrophic dead decomposed dead चीजों पर feed करना. Sexual reproduction दोनों होता है. They are like protozoa in their amoeboid plasmodial stage and similar to the fungi in spore formation, right. और fungi की तरह behave करते हैं, protozoa की amoeboid stage की तरह behave करते हैं, right, जब उन्हें spore formation करना होता है, right. So this is all about your Euglena and your slime molds. In the next video, we are going to discuss about protozoan protist, right, which include flagellated protist, ciliated protist, and sporozoan protist, right. So that's it for today. I hope you like the video, and if you really do, so please hit the subscribe button, do share the video. Thank you so much for watching.